Right. So today's class, because we are now going to move into the domain of RCC, that is reinforced concrete. So we need to know what basics of it, how it works, RCC होती क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, स्ट्रक्चरल का, आर्किटेक्ट्स का, सारी जिंदगी वास्ता तीन या चार एलिमेंट से ही पड़ता है जिसमें से आरसीसी इज वन ऑफ देम. सो हमने पहले पार्ट में मेसनरी इसलिए पढ़ ली so that we know what direction we are going to go in. There are three kinds of structure that we will eventually end up having knowledge about. Is the masonry structure जो residential घर हैं, फिर आरसीसी जो मोस्टली जो बिल्डिंग्स होती हैं, एंड देन उसके बाद स्टील स्ट्रक्चर जो कि 10 to 15% है. बट इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर वी नीड टू गेट द बेसिक्स ऑफ व्हाट आरसीसी इज, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट. Right. So, what is RCC? We had this discussion on just a plain paper और हमने सिर्फ sketches बनाए थे, but आज इसको डिटेल से देखते हैं. As I said in the class कि इसको डिटेल से देखेंगे. You have cement. Cement is not to get into the detail कि cement कैसे manufacture होता है, but cement is out there. Cement is one of the biggest production of Pakistan. As a matter of fact, Pakistan is an exporter of cement. We produce very good cement. It's an indigenous material to our country. And then we have fine aggregate. इसके basically technically we call it fine aggregate and coarse aggregate. Fine aggregate is sand, रेत, आम रेत जो ग्रे रेत होती है, and then there is coarse aggregate जो कि पत्थर होता है. इसके different sizes होते हैं. The sizes are to be dependent on the fact that, let me see, more admitted, non more admitted. Fact is कि सो कोर्स एग्रीगेट इज बेसिकली बजरी जो होता है. तीनों को मिक्सचर को आप जब बना लेंगे यू विल हैव कंक्रीट, प्लेन कंक्रीट, एंड देन इफ यू ऐड रीबार टू इट इट बिकम्स रीइंफोर्स्ड कंक्रीट. सो सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट and then plus rebar, you have this thing called reinforced concrete. Now the ratios vary in different fashions. It varies. Uh, it can vary, say, I would say, in structural concretes mostly. This is, sorry, this is say 1 ratio. जी जी. सर बस एक बात बतानी थी कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में कंक्रीट स्क्रैच से बनाई हुई है और उस पर काम भी किया हुआ है. That's good. बस ये एक ही स्लाइड है, यस इसके बाद सर. कुछ भी नहीं है कंक्रीट के बारे में. It will ओके. get take off from here, so don't worry. So you have these ratios. That's good अगर आपने concrete बनाई हुई है, but the bigger part today is the reinforcement of that concrete. That is going to get reinforcements. So if you know the basics of what it is, then let's move on. Right. The last class we had, हमने ये देखा था कि हर एलिमेंट में कंप्रेशन होता है और टेंशन होता है. ये कॉमन सेंस की बात है. यू विल हैव टू figure this out somehow or the other, basics of physics even actually, or you need to have good knowledge of structural mechanics. वो नहीं हो सकती सेमेस्टर में. To find out where is concrete में compression कहाँ है और tension कहाँ है. Apparently एक बीम जिस फॉर्म में डिफॉर्म होती है, टेंशन और कंप्रेशन आपको वहीं से पता लग जाती है. Does that make sense? So what I want you to guys to do right now is, and you'll have to put it in a folder that I asked you to put it in. I want you to do a little exercise for me. Can you do that? यस सर. Everybody please take out paper and pencil. And I'm going to draw, say, 5 elements, and I would want to know कि ये क्या है, ये कहाँ से आते हैं. So let's say if I have a concrete ka seesaw. That's a very fancy pen. If I have a concrete seesaw, first I want you guys to draw a deformed shape. Draw this please.
How do you think this will deform if there is load here and there is load here? Do this on a piece of paper, then take a picture and upload it. It will be just a class exercise. So if you've drawn something like this, give yourself a pat on So your the back. compression would be on the inside? Yes, the compression will be here Yeah, and the tension will be on the outside. outside. So what I'm trying to highlight here is that the deformed shape tells you a lot about where compression is and where tension is. So if I take a plank of wood, if I have nailed it to the wall, and if I apply load here, can you draw a deformed shape now? Are you drawing it? So the Yes, sir. deformed shape would be something like this. And I'm sure by now you can tell that this will be in tension. Wherever there is a stretch and when there is a compression, it's a compression stress. Hence, getting back to our slide, in a concrete beam, in a typical concrete beam, this is annoying me. Why is this here? Screen, pointer, pen. So, we've discussed this earlier on that concrete primarily is it going to cater for only compression. So if it's going to be only in compression, it's not as if will have zero capacity in tension, लेकिन वो इतनी कम होती है कि उसको हम इग्नोर कर देते हैं. So there is no use of taking that in account. So you have basically concrete block. You take this as a block. If you take a blob of concrete on a block or anything, and you just need to test it in compression because it's just a compression element. It will not take, presumingly it will not take any tension. So इसको सिर्फ compression का element ही consider किया जाता है. तो ये हमारी compression को तो cater कर लेगा ऊपर. But what about tension? Obviously, we discussed in the last card, we will put some steel in it because steel primarily caters for tension. So if you see these two arrows, it's tested against tension, and concrete will always be tested against compression. Make sense? So now there is this small Yes, video sir. example that what we do is basically there is a test code called ASTM, American Society of Testing Materials. When you're going to be working on construction sites, every concrete का जो बैच तैयार होता है उसमें से approximately 3 जो है सैंपल्स इस तरह के सिलेंडर निकाल दिए जाते हैं. This is 12 inches by 6 inches in diameter, and I'll just play this video and you can look into what this does. All it will be doing is that you make this sample. This samples come from your construction site क्योंकि हमने इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है. ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज जब आप काम करवा रहे होंगे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे और आपके पास कोई ठेकेदार है और आप जानना चाहते हैं कि क्वालिटी का काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये टेस्ट आपको वहाँ पे कराना बहुत ज़रूरी होता है. सो यू बेसिकली लैब आपको दे देती है सिलेंडर्स और जैसे जैसे वो कंक्रीट जो है वो स्लैब में या वो दूसरी चीज़ों में पोर हो रही होती है उसी तरह ये इसके वो भी बन जाते हैं. So you have these cylinders, you put them in a steel stocking, and then you simply put it in a compression machine. Compression machine does nothing more, nothing less. It presses from the top, and on the right side over here, you can see that it will note that specific value of force. Force in pounds, force in kgs. This is doing, I think, in pounds. It's written, yes, it's pounds. So this concrete block is now 3,000 pounds, 4,000 pounds. It keeps on going. Wherever the first crack appears, that was assumingly the compressive strength of this concrete material, which is being used at site.
Now, something important to see here is this formula. PU is the force that you have applied. FC is the stress value. Please, anybody can just stop, unmute yourself and stop and tell me if it doesn't make sense. It is, sir. Everything makes sense till Really? now. Wow. Yeah. Either you guys are genius or I am a good teacher, huh? But nonetheless, this is pretty simple. Both, Yeah, sir. mate. So, if you look at it, this is basically F. You can't write on this. PU is F. And what he's doing is stress is equals to force over area. This is the area of the cylinder. You can see that? This part? That's the cylinder. What the stress value gives you is the strength of the concrete in PSI. समझ आई बात की सबको? Please guys, you can unmute yourselves. Yes, sir. आपने previous class में भी ये समझाया था. This is important. Basically, I'm trying to repeat this in a structured fashion rather just on the notes. So this cylinder was tested. The cross-sectional area is pi r square or maybe pi d by 4 square. It's both can work. I like this one, so let's use this. So F is equals to stress into area, and stress is the capacity of the concrete is equals to force over area. So let's say उस मशीन के ऊपर फोर्स आई थी 10,000 pounds की, and area is assumingly let's say 6 inch square. So जो भी value आएगी that will be FC prime. Please remember this word, FC prime. FC prime is the strength of concrete that you will get from dividing the force that is applied on the machine by the cross-sectional area of the cylinder. Okay? This is what's happening. Pi d by square, and that's that. Everybody's clear? I want everyone to unmute your mics once and just say yes. Please. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पाँच हो गए, 6, 7, Yes, sir. 8, 9. No, Yes, बाकी? sir. Yes, sir. Yes, Yes, good. sir. The Yes, class I sir. feel like. Yeah, please you keep yourselves unmuted. Right. So far so good, but here comes the fun part now. What about steel? Somebody tell me, how will you test steel? In compression or in tension? Tension. Tension. Tension, sir. Tension. Tension. Yes, tension. What? So, one more term I want you to introduce you to is isotropy. What is isotropic? Isotropic is a very important concept in engineering. Isotropic means that a material has mechanical properties, same mechanical properties in all directions. समझ आई बात की? Let's say I take a rope. Okay, let's say I take a rope. This material is isotropic or no? It's not isotropic because in tension it has good capacity, right? But can you compress a rope? No. No, sir. No, you can't. So it's not isotropic. समझ आई बात की? The concept is कि उसकी properties compression में और tension में एक ही हो. So let's take other materials like a brick.
A brick, if you pull it, has a capacity of, if I say 600 psi. But if you push it, compress it, it has a capacity of 1800 psi. By now you should know psi. Does everybody know psi? Anyone who doesn't know psi so far? Huh? Anyone at all? So we can finally kill this beast psi. सबको पता है psi क्या है? Yes, sir. Good. Yes, sir. So what I'm trying to say is, if the brick can be compressed to 1800 psi, but can be only pulled to 600 psi, what does that mean? Is it isotropic or non-isotropic? Non-isotropic. Why? Non-isotropic. Because it doesn't have same properties in tension and compression. Absolutely. Excellent. Because it does not have the same properties in compression and tension. So there are a lot of materials that have properties, one property in one direction, the other property in other direction. So what about concrete now? I have iterated myself again and again. Concrete isotropic है या non-isotropic है? Non-isotropic है because वो सिर्फ compression handle करती है. Excellent. Very nice. Well done. ये कौन है इतना ज़हीन बच्चा जिसकी आवाज आ रही है? Who is this? Sir, it's me. That's Khalya and Mehrish. क्या बात है? Marish, I think she wasn't even in the class. So nonetheless, we come आपको now पता to... है क्लास स्टार्ट होने से पहले ही ना हमारा जनरेटर दोबारा ऑफ हो गया था. अब देखते हैं कब तक ऑन है. चलो, तो? that's good. ये स्टील के बार है, रीबार. Steel is essentially isotropic. So it can take both compression and tension. So इसमें जब आप सरिया खरीदने जाएंगे बाजार में तो आपको मिलेगा जी ग्रेड 40 एंड ग्रेड 60. बड़ी दुनिया के आर्किटेक्ट हैं जिनको आज तक समझ में नहीं आया कि ये क्या है और ये क्या है. ये समझना बहुत ज़रूरी है. बहुत 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 बहुत. I know almost any architect, nobody knows कि इसका क्या मतलब है जी ग्रेड 40 का सरिया या ग्रेड 60 का. Everybody knows हाँ यार ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, right? But steel is a very complex material. Steel is very tricky. Steel is very fun to play with. Steel has some amazing exhibits that it does, and that's why it makes it a very, very it's the only material so far in the world which is being used in reinforced concrete and nothing else has been used, which is very weird. So you look so happy talking about steel as Yeah. It's amazing. I mean, all my life I dealt with steel. So yeah, but Yeah. it has really amazing properties. So tensile strength. Let's look at this test. You're pulling it. You see a value on X and then you have a value on Y. What's happening? We'll look at it. But it's pulling it. Keep your close eye on this. As the force is increasing, it's extending more and more and more. It keeps on going and it's extending faster, 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 faster. And then this is called necking, where a neck starts to develop and the graph is dropping. What does this mean? We'll look at it, and that was it. Okay? This is very, very important to understand, guys. How many of you have 38? 10 still missing? सर आप अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन केस कोई इशू हो जाए नेट में. I'll believe you, don't worry. Tell me on WhatsApp. Okay, sir. I like to believe people. Okay, sir. Yeah, I do. I have a habit of it. So don't worry. Right then. So what's happening on that test that we just saw? So what just got developed while we were testing is called a stress strain curve. This defines the entire, I would say, the property of the mechanical property that steel holds in tension.
Okay. By what I mean is, now please look at this very, very carefully. This I can assure you will be the part of your midterm and final exam. Okay. On the x-axis, we have strain. On the y-axis, we have stress. So this was the bar in the machine, and this force is pulling it up, and this force is pulling it down. This is the cross-sectional area A, and this is F. So stress is, क्या बनेगा stress? This force divided by this area, right? Yes, sir. So this force divided by this area is the stress, which is on the y-axis. Here. Stress. I have this very blue, annoying blue line. I don't know why it is here. Why is it here? How is it here? सर आपका लैपटॉप खराब हो गया होगा. Don't say that, please. Who was that? ये ऐसी बात ना करना. This is a very, very good laptop. This is something. This is something I draw, I guess. I don't know how I drew it. Anyways, forget it. So force over area is the stress that is on your y axis. So Sir, what's take on eraser from here. Try to erase it. where from? Yeah, right next to the pencil on your left. No, actually that is just gone. ये किसी ने किया? Somebody of you did it, I Yes, guess. sir. मैंने eraser try किया था, वो मेरी side से हो गया. Sure. Thank you very much for repeating that. Thank you. No So problem, we sir. have strain here. Now the strain here is, what is strain? Strain is that if I have an object of a length L, and when I stretch it, it becomes of L2. Okay? So L divided by L2 is strain. Technically, we call it change in length. Strain is change in length. समझ आई बात की सबको? So if you take, let's say, जो इलास्टिक होती है आर्म सी, आप खरी पकड़ के आप उसे जब खींचें, let's say you've pulled it in this direction and in this direction, अगर ये पहले 6 inches की थी and now it turns into 10 inches, so 6 divided by 10 will be strain. समझ आई? Yes, sir. Please, everybody, unmute your mics and let me hear you guys. Yes, sir. Yes, sir. Change Yes, in sir. length Yes, is sir. strain. Sir. Grab this concept. Change in length. Okay, thank you very much. Change in length is strain. So on my x-axis, I have change in length, and on my y-axis, I have the stress. Not force, not the original length here. Change in length and stress. ठीक है? So it's basically dl or delta L. You can say that it's the change. Change, change, change. Keep that in mind. So if I have change in length, now if this line, what is it showing? What is it showing? As I'm increasing the stress in the bar, it's changing in length or not? It is changing. Yes, sir. It's changing in length. Of course it is. Because see, it's gaining value on x. So I'm changing in length. Okay. This curve till here, it goes up till here. And if I stop applying the force, this will come back here. Hold on to this thought. Let's say, I should take a screenshot of this actually.
Right, this is better. So as I'm increasing force, let's say the stress here is 10,000 psi, and the stress is increasing now 20,000. Say now 30,000 हो गया. I'm applying more force, 40,000 हो गया, 50,000 हो गया, 50,000 psi. And strain जो है, let's say it's 1% or 0.01, and then 0.02 and 0.03 पे पहुंचा. Right. This is called proportional limit or this is called elastic limit. यहां तक, इस particular curve तक, this is elastic region. इधर तक I won't say it चलें इधर तक कर लेते हैं. It bends a little bit. अमूमन जब टेस्ट होता है, I don't know why this curve is like this. This test is something like this. This is elastic region. What would that imply? What does that mean? Common sense क्या कहती है? What is elastic region? अगर इस लिमिट तक कोई चीज स्ट्रेस होती है और उसको वापस छोड़ दिया जाए तो वो वापस एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगी. Excellent. Right. नहीं, ये इसका ये मतलब है कि अपने इस लिमिट तक स्ट्रेच हो सकता है ये स्ट्रेच हो सकता है या टेंसाइल स्ट्रेंथ उसके ऊपर आ सकती है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जो भी होगा दैट विल गो इनटू प्लास्टिक लिमिट. दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द प्लास्टिक लिमिट स्टार्ट्स. ठीक है. प्लास्टिक लिमिट का मतलब है कि डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाएगी. इट इज नॉट कमिंग बैक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन. सो यू विल गेट दिस कर्व और मैं बताऊंगा, आपसे पूछूंगा इलास्टिक रीजन कहाँ है, यील्ड स्ट्रेंथ कहाँ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है, फ्रैक्चर क्या है. सो मैं अब अपने सील को मैंने यहां पे अगर मैंने छोड़ा, लेट से मैंने इसको रिलीज किया, तो ये वापस कहां आएगा, दोबारा टेस्ट यहां आ जाएगा, एंड देन इट विल गो अगेन हेयर. मैं अगर दोबारा छोड़ूंगा तो ये अगेन बैक एंड फोर्थ इधर आएगा. माई क्वेश्चन टू यू इज, इफ आई टेक इट अप टिल हेयर एंड आई फॉलो दिस पैथ अप टिल हेयर, अगर मैं यहां छोड़ू तो क्या होगा? परमानेंट डिफॉर्म. परमानेंट डिफॉर्मेशन, यानी कि ये जो स्ट्रेन है ये अचीव हो चुका हुआ है. सो दिस इज गोइंग टू गो हेयर एंड इट विल ड्रॉप हेयर. और अगर मैं फिर इसको लोड अप्लाई करूंगा तो ये सीधा यहां जाएगा, यहां से नहीं आएगा. Fun thing. This is a bit confusing for a while, but grab the concept. There are lots and lots of videos on stress strain curve. जी. सर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इलास्टिक रीजन को अगर वो लेबल ना हो? Very good question. So अब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं. जहां पे ये कर्व लीनियर है, द स्लोप इज लीनियर स्लोप. ठीक है. डी सिग्मा बाई डी एस, जहां पे ये स्लोप सीधी है, दैट विल बी योर इलास्टिक रीजन. जहां पे ये टेढ़ी होना शुरू होती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट. And ladies and gentlemen, this yield point is what defines सरिये का grade. Grade 40 and grade 60. It is this point जहां पे हम quality of steel को identify करते हैं. क्योंकि इससे पीछे पीछे रखना है हमने सारा डिजाइन को, हमने permanent deformation में कभी जाना ही नहीं है. So if you are going to the market and your client is asking you कि जी सरिया आर्किटेक्ट साहब कौन सा लूँ, grade 40 लूँ या grade 60 लूँ, आप उसे कहते हैं यार grade 60 लो. वो कहेगा जी फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि ग्रेड 60 पे ये यील्ड हो जाएगा 60,000 psi, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है. समझ आई बात की? सो ग्रेड Yes, sir. यस सर. 60 has an FY yield strength of 60,000 psi. So grade 40 की क्या होगी? हाँ, 40,000, sir. 40,000. Similarly, there is grade 80 for special projects. PSI. So आप उसको ये कहेंगे जनाब कि जो आपने सरिया खरीदना है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ, ये वाली पॉइंट जहां तक ये लीनियर है. लीनियर का मतलब पता है ना? लीनियर है, नॉन लीनियर. डू यू नो द डिफरेंस? यस सर, स्ट्रेट लीनियर होता है. हाँ,
If a function So is like upward. this is linear. This is either, if x is equals to y square, is it linear? No, it's not. This curve is something like this. ठीक है? X is equals to 2x is 2y is linear. ये ऐसे होगा. So straight lines on the curve are linear, and the curvy lines or multi-curve lines are bilinear and non-linear and other kind of functions. But for us, elastic limit is where the curve is linear. Okay? As long as this is linear, Yes. we call this the elastic region, and this point is your Fy, and Fy is your yield strength. So grade 60 की yield strength होगी 60 psi, 1000 psi, 40 की 40,000 psi. ये इसकी इलास्टिक लिमिट होगी. अगर आप we pull this further, इसको अगर हम आगे लेके जाते हैं तो एक पॉइंट आता है जहां से ये कर्व डाउन करता है. ये प्लास्टिक रीजन है. This curve, I don't know why he has drawn like this, but forget it. There will be curves where it is going to be just like this. Okay, I want you guys to ignore this hump. Then you have the ultimate strength. Ultimate strength क्या होती है? जब स्टील की जी जी सर ये जो यील्ड स्ट्रेंथ के बाद जरा एक डिप से आता है, ये क्या है? इसको भी इग्नोर कर दें आप. इसको कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी, विच आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्लास. स्ट्रेन एनर्जी इज आखिरी सांसें. ठीक है, ये स्ट्रेन एनर्जी होती है. रेजिडुअल स्ट्रेसेस होते हैं जो कि किक बैक करते हैं. इसमें हम नहीं पढ़ेंगे. हमारा कर्व है जो, जिसमें हमारा जो कर्व होगा वो बड़ा सिंपल है, जो मैं चाहता हूँ हमको पढ़ाना. ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं, वरना दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टफ. यील्ड पॉइंट एंड देन अल्टीमेट पॉइंट एंड देन necking and that simple drop. So Fy, yield, ultimate point वो पॉइंट है. ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती जाती है जहां से ये वापस नहीं आना. लेकिन यहां पे आके बिल्कुल स्टील की जो है वो मत मारी जाती है, और इवेंचुअली इट नेक्स एंड ब्रेक्स एंड गोज डाउन. फॉरगेट दिस पॉइंट. सर, जी, हम ग्राफ में इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर लेबल ना हो? किस चीज को? आपने अल्टीमेट इसके कर्व पॉइंट को ऑफ देखना है. एस्पेंड ड्रॉप होता है. आपने इसके कर्व को देखना होगा. जब देखें इट इज गोइंग टू डिप डाउन, when it is going to be dipping down, when it is starting to go down, this is it point, जहां जिस पॉइंट पे ये यूं आ रहा था सीधा और डिप डाउन हो रहा है, दैट इज अल्टीमेट. जिस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन कर्व सीधी होना शुरू होगी, दैट इज यील्ड पॉइंट. जिस पॉइंट पे ये लाइन एकदम से एल्बो बना के नीचे आ गई है, दैट इज ब्रेकिंग पॉइंट. समझ आई? दैट इज हाउ Okay, यू sir. आइडेंटिफाई. Yes, sir. तो आप लैब गए, आपने लैब में टेस्ट देखा, इंजीनियर साहब को या आपको आर्किटेक्ट साहब को उन्होंने वो दिखाया, एंड यू से कि यार ये क्या चीज़ है, एंड देन यू गेट टू सी कि भाई ये तो सर ये की प्रॉपर्टीज ये हैं. सो दैट्स दैट. यंग्स मॉड्यूलस इज सिंपली द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगेन. Very very important property for finite element analysis, advanced mathematical modeling, but not any relevance to you. I want you guys to be well versed with this curve. Fracture is the point where जब ये दो हिस्से इसके हो जाते हैं. So important for you is to identify elastic region, plastic region, yield strength, ultimate strength, and fracture point. Okay? Is that Yes, okay? sir. ठीक है. सर, आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसमें क्या होता है? Right. Let's go back to the video that we saw. That might be a little helpful. अब ये वीडियो देखिए जरा गौर से. So you see he's applying load. This is very linear, right? Linear का मतलब है कि strain is linearly increasing with increment in stress. सही है? Suddenly what happens? The yield point has occurred. Now this is not linear relationship anymore. और इसके बाद जो है अब वो अल्टीमेट या प्लास्टिक जोन में चला गया इसके बाद. ठीक है?
कैन यू सी दिस? ये इलास्टिक जोन थी यहां तक. अब ये प्लास्टिक जोन में जो बेचारे की हिम्मत है वो कर रहे हैं. इफ आई फास्ट फॉरवर्ड दिस, यू कैन सी हाउ इट इज गोइंग टू. कैन यू सी दैट प्लेस? See how it has. If you look at the steel, look over here, how quickly now it's changing its shape, because the Yes, sir. deformation is now plastic. And at this point, I would say, at this particular point, the ultimate strength has been reached. अब स्टील के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो उसका एफसीसी क्रिस्टल है, वो जवाब दे चुका हुआ है. इसके बाद इट विल जस्ट सिंपली गो डाउन एंड इट विल जस्ट, दिस पर्टिकुलर पार्ट is called necking. Can you see necking? It's necking, it's thinning. Yeah. Laterally, this is necking. Look at it. Look at, so beautiful. Can you see that? How nicely it's necked out. How the atoms, how the crystals have segregated and parted ways from each other, saying bye bye for the final time. And then it necks more and more. This thing, this thinning, lateral thinning is called necking. And simply that is the breaking point. Okay? Make sense? Yes, sir. Anybody still confused? We can take another go at it. No? No. वाह. नो सर. तो मुझे तो लगता है क्लास लेनी ही ऑनलाइन चाहिए फिर. Everybody is focused. So, Yes, sir. thank you for that very enthusiastic response, whoever that was. So yeah, so now get well versed with this. You'll get to see these reports. My curve is going like this. It yields. Why is that? It yields. It goes into the till the ultimate strength. Ultimate strength यहाँ fail होती है. It drops. It necks. Necking region. And then this is breaking point or fracture point actually. Sorry. Not the time to enter the class now. Fracture point. This. सर एक और जी. क्वेश्चन है. जी जो जी. हील स्ट्रेंथ है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, उसके बीच में क्या होता है? ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है ना. दिस इज परमानेंट डिफॉर्मेशन. जब वो शॉर्टन हुई थी वो ये पॉइंट है. जब ये Steel वो bar. लंबा होना शुरू हो गया था बहुत ज्यादा, जब जी, वो जब वो like परमानेंट छोटी होती डिफॉर्मेशन जा है. रही थी. सो फॉर एग्जांपल आप, सही है. इफ यू टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट इलास्टिक, वो जो इलास्टिक यूज होती है कपड़ों में, आप उसको थोड़ा सा खींचते हैं, इट गोज बैक, राइट? एवरी टाइम यू विल पुल इट, इट विल गो बैक. यस सर. इज दैट ट्रू? यस सर. But if you start pulling it very strongly, you'll see that it will deform permanently. Then there is no coming back from there. ऐसा ही है. Elastic, Yes, sir. वो जो Yes, sir. elastic है जो कपड़ों में इस्तेमाल होती है, that's a very good analogy to steel. ठीक है? Anyways, ये necking, fracture, necking, ultimate, ये yield हो गया यहाँ पे. ये region जो है, essentially this region, we call this elastic, and then we call this region what do we call this region? Plastic Plastic region. region. Plastic. Not coming back. Gone. Forget it. Move on with your life. Find someone else. Maybe coming back, but actually coming back. Make sense? Huh? So there is always the coming back chances always are very less. Not coming back is a longer region. You guys समझ आ गई बात की? नहीं समझ आई.
Yes, sir. आ गई है सर. Yes, sir. So this, let's move on to another concept now. I'm very happy that I'm recording this lecture so that you can always go back to it when your exam is here. I have two kinds of materials: brittle, ductile. Does anybody know what that means? Brittle क्या होता है? Common sense, off the cuff, चवली मारे, anything. सर ब्रिटल वो होता है जो इजीली टूट जाता है. Easily टूट जाता है. और ductile जो कि लीचड़ होता है. है मेरे यहाँ पहले परमानेंट डिफॉर्म होते हैं उसके बाद फिर वो टूट जाता है. राइट. सो डक्टाइल का मतलब है कि एक ऐसा लीचड़ किस्म का मटेरियल जिसको मैं खींची जा रहा हूं, 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 वो टूट नहीं रहा. इट इज नॉट डिपेंडेंट कि कितना स्ट्रेस ले रहा है वो, इससे उसका ताल्लुक नहीं है, इसकी स्लोप से ताल्लुक है इसका. समझ आई? मतलब मैंने एक इलास्टिक ले लिया, मैं उसे पकड़ के खींच रहा हूं, 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 वो इतना लंबा हो गया. let's say I've taken this material, elastic, and I stretch it till here. And if this was 5 inches and now this is 10 inches, so 5 divided by 10, the strain is 0.5, that's 50%. मैंने इसको 50% खींच लिया है on either direction, 25, 2.5 here, 2.5 here, और नहीं, 5 divided by 10 is 10, 50, हाँ 50%. सो 50% का स्ट्रेन आ चुका है, फिर मैं इसको छोड़ता हूं तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है 5 इंचेस पे. इज दिस अ डक्टाइल मटेरियल और अ ब्रिटल मटेरियल? सर डक्टाइल. सो ऑन अ कॉन्ट्ररी, आई टेक अ मटेरियल और ये दिस इज 5 इंचेस एंड आई स्ट्रेच इट टू लेट्स से 6 इंचेस and it breaks. So the strain here would be 5 divided by 6. That can be 5, 6, तकरीबन कोई point 6 point 10 आता 0.08. That is very less. If I plot it, let's say this is material 2 and this was material 1. This represents material 1. So the strain was 0.5. If I am plotting material 2, same strength, but the strain was 0.08. What do you see the difference in two lines? इन दोनों में क्या फर्क है? क्या फर्क है इन दो लाइंस में? इलास्टिसिटी ज्यादा है. नहीं, सिर्फ लाइंस में क्या फर्क है, लाइन की स्लोप में क्या फर्क है? एक स्ट्रेस कम ले रहा है, दूसरा ज्यादा ले रहा है. नो, स्ट्रेस तो दोनों का एक है. स्ट्रेस तो मैंने ये लुकिंग एट दिस कर्व 0.8 वाले के ग्रेडियंट सर स्ट्रेन में डिफरेंस है क्योंकि एक्स एक्सिस में डिफरेंस आ रही है. यस, स्ट्रेस तो सेम है दोनों का. लेट्स से दोनों का 500 सर psi है. स्ट्रेन सेपरेट है. जी, मटेरियल्स विद लो स्ट्रेन. सर स्ट्रेन इज लाइक चेंज इन लेंथ ना, तो जी, जी, जो change in टूट रहा है उसकी कम चेंज हो रही है और जो ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है उसकी ज्यादा है. यस, वेरी गुड. तो ये लुकिंग एट द कर्व, आई विल आस्क यू इन द एग्जाम, मुझे कर्व देख के बताया जाएगा कौन सा मटेरियल ब्रिटल है, कौन सा नहीं है. ओके, सो द लोएस्ट, जिसकी ज्यादा स्लोप है, इसकी ज्यादा स्लोप नहीं है, इसकी कम स्लोप है. If I look at the slope, it's too less. If I go by like dy by dx of material A, it's much smaller than dy by dx of material 2. dy by dx is simply a fancy way of saying slope of the line. Okay? So the brittle material does not offer you much ductility. So it's a brittle material. Ductility, materials with more slope are called ductile materials. So now I'm going to make a curve here and I want you guys to tell me on the chat, not on the mic, all of you, all
38 of you, एक मटेरियल ये है, एक मटेरियल ये है, सब टेंसाइल टेस्ट हैं, ओके। एक मटेरियल ये है, सबको पता लग गया होगा ये अल्टीमेट पॉइंट्स है, ओके, जहां पे इसका कर्व टेढ़ा हो रहा है। ये इनके यील्ड पॉइंट्स हैं जहां पे कर्व सीधा हो रहा है। ये एक ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल है, इसमें यील्ड हो ही नहीं रही, ये सीधा जाके टूट रहा है, ओके। नाउ लेट्स से दिस इज ए, सर कौन सा मटेरियल? छोड़ दो उसको, ऑर्थोट्रोपिक, नॉट इंपॉर्टेंट। ए, बी, सी एंड डी। नाउ यू राइट योर मटेरियल्स फॉर मी, ए से लेके बी तक, in the order of which is more ductile, okay। सारे के सारे चार्ट पे लिखो प्लीज। मतलब if I think B is more ductile, I'll write B, comma A, comma C, comma D, इस तरह। Write for me from an order in this ascending order from ductile to brittle। सर डी ज्यादा डक्टाइल है, देन सी, Don't देन say बी it, just एंड do ली। it, write it. Write it on the chat. Let me see. Not like A, right? Like D, C, A, B, okay. Hijab, I am saying ductile to brittle, not brittle to ductile. ओके सर। D, C, A, B. D, C, A, B. B, A, C, D. D, C, A, B. Excellent. So most of you got the gist. This is D, C, A, B. Oh, sorry, D, C, B, A. Because, yeah, kind of B and A have the same, yeah, same slope. So, yeah, B, A or A, B, same thing. Good. Well done. So, ductile material and brittle material. So, the slope tells you where is the ductility and where it is not. Okay. Now, another question is, I want you guys, we've performed a test on a steel bar in the lab and we got a curve like this, and I want you guys to tell me or identify for me the grade of the steel it is, okay? Again on the chart please. So I have strain on this line, strain mostly is 0.01, 0.02, 0.04, 0.08 and so forth. So I have, अब मैं टेस्ट शुरू किया मैंने, it goes on and 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 on, and then it goes like this and this and this and this and this and this, and then it drops. Okay, so this is a point value and this is a point value, and I have 70,000 here. Then I tested, this is A, and this value over here is 90,000. Then I have another test subject which I tested, and it went on and on and on and on and on and on and on, and it curved like this, curved like this. Okay, and this is 40,000 psi, and this came out to be again 40,000 psi, and then this is the breaking point. So this is B. On the chart I want you to tell me what is the grade of A and what is the grade of B.
keeping in view both the ultimate strength, yield strength, and ultimate strength. Please write down. Grade 70, grade 80, G70, G80, good. A70, very nice. Spuzme, you're on fire today, huh? A70, B is 40. So, honestly, now I really need to know this. For me, it's important. Okay, you get all you know what I'm talking about. Thank you very much. Honestly, now I want you to tell me: do you understand the concept of this or not? This test. Yes, sir. Yes. Yes, Every sir. one of you does that. यहाँ ये Yes, जाके sir. लैब में एक टेस्ट Yes, करवा sir. के दिखाया भी जाए उसकी जरूरत है समझ तो आगे सर, बट इट वुड बी फन, मतलब It's not fun. सामने It's हो रहा है really तो हाँ वैसे इट्स इम्पोर्टेंट, बट लाइक आपको ज्यादा समझ आ जाएगी जो भी है. ये जरूरी बहुत है इसका रीजन ये है कि you सर really हम उससे ना थ्योरी से प्रैक्टिकल समझ सकते हैं, लाइक सिर्फ पेपर पे नहीं, हम एक्चुअल में भी समझ लेंगे अगर हम ठीक है देखें उसे तो. we can try. I took all the classes to comsats VA and we performed tensile tests over there और फिर जाके देख लेते हैं. ये इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों के आगे आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स में आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि यार सरिये की स्ट्रेंथ क्या होती है, एफ वाई क्या होगा, यील्ड क्या होगा. कोई ठेकेदार आपको उल्लू ना बना सके. सो यू नीड टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. Anyways, now we have a gist of what this is. Let's move on a little bit further. Right, then so in structural engineering, we have two types of elements. इससे पहले का सारा क्लियर हो गया. वी हैव कि कंक्रीट क्या होती है Yes, वो आप लोगों ने sir. ऑलरेडी पढ़ा हुआ Yes, है. sir. कंप्रेशन, कंक्रीट सिर्फ कंप्रेशन लेता है और स्टील सिर्फ टेंशन लेता है. And then we have how to check the strength of concrete, and then we have how to check the strength of steel, the steel element. And so far, if I just ask you guys to make something for yourselves, just you need to see this, how something will deform. You have to build that instinct. एक घर बनाया, ये घर की बालकनी है. क्लाइंट कहता है मुझे इस पे आगे से कैंटिलीवर चाहिए 7 फुट का. ये किस तरफ बेंड होगा? कैन एनीबडी टेल मी? इफ दिस इज द डायरेक्शन ए, दिस इज डायरेक्शन बी, ये लोड है, विच डायरेक्शन विल इट गो इन? A. A. So it will go like this. Where is tension? Top, B or A? B. B. A. टेंशन कहाँ होगा? ए. B. 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 This is elongating. This is stretching. The way wherever there is a stretch, there should be टेंशन. tension. And when there is concaving, let's look at it another way. Convex and concaving. If it's a convex surface, it's tension always. Wow. Yeah, I just created a concept. And when there is a concave surface, you're looking at from the inside. You know the concave and convex, right? यस. Yes, sir. Yes, पता है sir. ना? Yes, sir. What is a concave and a convex? Something like this. If you're from here, it's convex. And if you're looking at from here, it's concave. Concave or concave or whatever. So imagine something bending in a direction. अब बताएं जरा. This slab. Where is the convex and where is the concave? कन्वेक्स ए पे है और बी पे कन्वेक्स. Concave is on B. Okay. If concave is on B, then there is compression here. यस. And if the convex is on A,
there is tension here. Does that make sense now? Yes, sir. This is something much more easier now. Where do you put Yes. steel? Where do you need steel rebars? Where? टेंशन की बात Everybody, where? Sir, tension. Tension mein, yes. You need it in the tension zone. Where else? You need it in the tension zone. ये है, तो ये यहां पे आपको स्टील रीबार चाहिए होगी. Because, can anybody summarize for me, please? Let's see. Sir, because concrete only takes compression and steel rebars takes tension. That's why. Fiza, can you explain to me what just happened? Fiza, Yes, sir. what has just happened? What did I just say? Can you summarize it for me? Sir. Yes, sir. You said tension will be in the upside उधर स्टील डलेगी ताकि क्योंकि स्टील की टेंशन अच्छी होती है और कंप्रेशन ब्रेक की हो. ब्रिक की होती है. ब्रेक हाँ? की कंप्रेशन अच्छी होती है इस वजह से स्टील टेंशन. ब्रिक कहां से आ गई? Where is the brick? Did we even take the term brick? Are you just having your breakfast just in the class? Huh? I did not even mention brick. मैंने तो brick का नाम भी नहीं लिया. I'm talking concrete. What are you talking about? Yes, sir. What yes, sir? Concrete, sir. Sorry, brick. Azaz, are you there? Azaz? Very good. So you just guys have logged in and you have disappeared. Azaz? This is a better option. I should check everybody then. Azaz, are you there? Remove him. Ayman Zahid, are you there? Ayman? Armagan? Or Shian? Are you guys even there? How many of you are there? Can you please just type how many are you there? Just please, Yes, sir. I am. Yes, sir, we're here. please put it on chat. I want to see how many are you there. Muntaha Noor, are you there? Above all, Kambar, are you there? Yes, sir. शुक्र है. And Aisha, are you there? Aisha, Yes, sir. you there? Yes, sir. Ahmer? Yes, Ahmed? sir. Good. Yes, sir. Yes, sir. Random check is important. Yeah, sir. Okay then. So now where were we? Elements of concrete. Right. So every element in the structural engineering can be categorized into two things: plate elements and line elements. So beam is a line element. Okay? And plate is a planar element. Essentially, plate has two or more than two corners. So if you look at it, सर ये 2D स्ट्रक्चर की बात हो रही है 2D हो 3D हो, बीम के दो ही सिरे होंगे ना, बीम के दो सिरों से ज्यादा हो नहीं सकते. ठीक है, इसी को मिला के 3D बन जाएगा when you have more beams. Then again, this is more than two nodes. It's a plate element. It could be 3 by the way, but 3, 4, 5, whatever. Beam और कॉलम के दो ही सिरे होंगे कि नहीं?
3D हो 4D हो जो भी हो, बीम के तो दो ही सिरे होंगे, कॉलम के दो ही सिरे होंगे, ऐसा है कि नहीं है? लुक Yes, अराउंड, sir. Yes, sir. एक कोने से स्टार्ट होगी, दूसरे कोने पे एंड होगी. सो वी कॉल इट अ लाइन एलिमेंट. अ बीम इज अ लाइन एलिमेंट, कॉलम इज अ लाइन एलिमेंट. प्लेट में स्लैब्स, रिटेनिंग वॉल्स, शियर वॉल्स, फाउंडेशंस, फ्लोरिंग एटसेट्रा, जो भी प्लेट की तरह बिछते हैं या किसी भी कपड़े की तरह बिछाए जाएंगे, वो खड़ा हुआ भी हो सकता है लेफ्ट टू राइट, या वो लेटा हुआ भी हो सकता है, दैट इज ए प्लेनर एलिमेंट, अ प्लेट एलिमेंट. ओके, as we move on, this concept will be a bit clearer. Look at सर this रूफ beam भी now. प्लेट एलिमेंट होता है. जी जी, रूफ स्लैब होती है ना. डोंट कॉल इट रूफ. In architecture you will call it roof, but in structure it's a slab, a roof slab. Steel bars वगैरह भी line elements होंगे ना? No, steel bars तो उन line elements के internal components है ना, उसको तो नहीं हम देख रहे. अच्छा. हमने अब आरसीसी में आ गए हैं. अब हमने क्या किया, हमने सरिया ले लिया, हमने सीमेंट ले लिया, हमने बजरी ले ली, हमने रेत ले ली, हमने सबको मिक्स करके बना के एक चीज बनाई जिसको कहते हैं आरसीसी. ठीक है. सर कैंटिलीवर्स फिर उसमें आएंगे प्लेट एलिमेंट्स में. यस, कैंटिलीवर स्लैब्स आर प्लेट एलिमेंट्स. सो प्लेट एलिमेंट्स है मेरे पास और मेरे पास लाइंस हैं. इट्स जस्ट लाइक अ लेगो किट आई हैव इन इंजीनियरिंग. मेरे पास लाइंस हैं और मेरे पास प्लेट्स हैं. इनको मिला के मैंने कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू अपना पूरे का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना है. यू गेट माई पॉइंट? Yes, sir. सो लाइन एलिमेंट जो है ये इस तरह ही है कि फॉर एग्जांपल आपने आटा अगर गूंदना है, उसमें नमक डाल दिया, उसमें आटा डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया, अब वो आपके पास से एक मश क्रिएट हो गया. अब उस मश से आप प्लेट बनाए, पराठा बन गया. उस मश को आप पतला करके कोई एक बिस्किट नुमा चीज बना ले तो वो लाइन एलिमेंट बन गया. दैट्स इट. दैट्स स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक्चुअली. यू हैव लाइंस, यू हैव स्टिक्स and you have plates. You assemble them together. स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इज बेकिंग. It's very close to baking actually. What's the difference? You bake, आटे की जो भी चीज बनाते हैं आप उसको अवन में बेक कर लेते हैं, वो सख्त हो जाती है. ये भी आपने एक लेबी ली, उसमें सरिया डाला, उसको भी आप पानी की क्योरिंग करते हैं, ये भी सख्त हो जाती है. अब दोनों की यूज डिफरेंस है. Make sense? So I have if I have to create, let's say, a multi-story building, I have line elements. ये लाइन ली मैंने, ये लाइन ली मैंने, ये लाइन ली, ये लाइन ली, ये लाइन ली, ये लाइन ली और ये लाइन ली. सो आई हैव बीम्स, बीम, बीम, और उनको मैंने नाम दे दिया बीम, बीम, बीम. इनको मैंने कह दिया जी कॉलम, कॉलम, कॉलम. और इसके दरमियान में मैंने क्या डाल दी? एक क्या डाला? रूफ स्लैब. Slab. Slab. So yes, so I have line, 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 line and a plate. अब मैंने साथ वाले घर से अपनी दीवार अलग बनानी है. मैंने अगर चुनाई कर दी तो अगेन अ ब्रिक की प्लेट. मैंने घर के नीचे फर्श डालना है तो मैंने एक और प्लेट डाल दी. सो थिंक इन टर्म्स ऑफ प्लेट्स एंड लाइंस, नथिंग मोर, नथिंग लेस. मैंने अब एक ब्रिज बनाना है अक्रॉस द रिवर. सो what I will do is, basically basic concept तो यही है ना. There is this river, so what do? I take a lot of lines. I take this line, 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 and then what I do is, for the cars, I lay down a plate. On the bottom, again line, 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 plate. So nothing more, nothing less. That's your RCC. जो कि आप जितना मर्जी कॉम्प्लिकेट करके बता दें, बट इन बेसिक नंबर्स दिस इज जस्ट वेरी वेरी सिंपल. यू टेक योर प्लेट्स and you take your lines and you assemble them to make structures. So you have structural beams. These are the beam structures that you have. Now you can see these are main bars. Since they are on top, so there are top main bars. These are bottom, so they are bottom main bars. ठीक है? These are shears. We are not going to study these
this is going to just do, or maybe we'll just know the simple purpose of what they do. But right now, these are important for us. Okay? Can you see how this works? ये विजुअल सिर्फ मैंने इसीलिए डाला है कि आपको पता लग जाए कि सरिया अंदर डलता कैसे है. Okay? Yes, sir. Now comes the main part. You need to, as an architect, be sufficient or capable enough to read a structural drawing. That structural drawing you'll get like this. You have a beam in front of you. You have top reinforcement. If I go back in 3D, this is top reinforcement. Okay? Then this is bottom reinforcement. These are the shear bars. This is the mid bar, usually not used. Okay, so if I have 4 bars here, how can I show it on a plane drawing in an elevation? Do you have any ingenious idea? Please share it with me. Sir, आप दोबारा explain कर सकते हैं? So अगर- we'll write down somewhere. अगर ये 4 बार्स हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 है ना यहाँ पे, और ये प्लेन एलिवेशन ड्राइंग है, मैंने इस ड्राइंग में शो करना है, तो ये इस एलिवेशन में ये टॉप बार आ गई. मैं ये कैसे बताऊंगा यहाँ पे ये 4 बार्स हैं? सर लिख देंगे. लिख देंगे, बड़ी सिंपल सी बात है. ऐसे 4 नंबर 8 बार्स लिख देंगे. वेरी गुड, वेरी जीनियस. Yeah, I am, sir. I am. Wow, that confidence will let you down someday, Malia. 4 number 6 bars. So what is number 6? I explained this in last class, right? Did I? No, sir. No, No. I did. I think I did. No? No, sir. No, sir. Okay, No, sir. let's go there then. So, obviously, the bar, obviously, very obviously, is differentiated on the basis of dia. ठीक है? You know the diameter, what is that, right? ये dia होता है. यही एक differentiation ही होगी ना. We have this bar, 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 we have a bigger bar in the increment of the diameter. So somehow the other extremely stupid way of explaining this is, extremely stupid way, I don't know why somebody came up with, he did was he thought that we should have a magic number 8. So this is, every time I teach this I laugh because this is extremely stupid. So when I say a number 4 bar, what I mean is 4 divided by the magic number 8. The constant 8. What is 4 divided by 8? 0.5? 0.5 inches, right? Square. 0.5 inch square. ठीक है? So 4 divided by 8 is 0.5 inch square will be the diameter of the bar that I'm trying to tell you to buy. Now on your piece of paper, Like, एक second, hold on, don't be just worried. Just give it a shot. I tell you that the bar is number 6 bar. तो इसका diameter कितना होगा? Try it. Try it please and write it on the chat. 12, sir. 6 divided by the 12. magic number 8. No. Yes, 8 is always 8. 8 is not changing. 2.7. 0.75. Yes, excellent. This will be 0.75 inch. Sorry, this is not square. Inch is the diameter. So number 6 की बार का diameter होगा 0.75. Isn't this stupid? Do you agree? I mean, we could have just said that dia 0.75, dia 0.5, Yes, dia yes. 0.25, but no, we have this way.
so that the rest of the world does not know what we are doing. Engineers want to be secretive, I guess, but this is an extremely dumb way of doing things. So what about dia number 12 bar? Number 12 bar का dia क्या होगा? Quickly please. Everybody on the chat. Calculate and let me know.
Can you guys hear me loud and clear? You guys have structural engineering next year as well? सॉरी सर, सुना नहीं। मैंने कहा अगले साल भी आप लोगों की स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की क्लास है? नो सर। होती है सर। है? स्प्रिंग में अगले साल 2025 में किस क्लास का स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का कोर्स है? आप लोगों का नहीं है? होता है सर। नहीं, आप लोगों के पास कोर्स शेड्यूल होगा ना। ये तो स्ट्रक्चर्स 1 है ना, स्ट्रक्चर 2 अगले साल पढ़ाएंगे या आगे जाके है? चेक करना पड़ेगा। चेक करना, बिकॉज दे वर गिविंग मी अ लेक्चर इन स्प्रिंग, सो एम आई गोइंग टू बी टीचिंग यू गाइज और नॉट? सर हम ही होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी सेकेंड ईयर ने पढ़ा था स्ट्रक्चर्स 2। स्ट्रक्चर 2 पढ़ा था, चलो दैट्स गुड, देन आई कैन डिजाइन द होल कोर्स इन दैट डायरेक्शन ना। फिर हम अच्छा और ज्यादा इसको इंट्यूटिवली करेंगे। अच्छा, ये 29 आ गया ना, बाकी सारे सोए हुए होंगे, लगा के चले गए होंगे, चलो फिल्टर हो गया, दैट्स गुड। ऑलराइट, लेट्स रिज्यूम विद आवर लेक्चर। So I should screen share now. Right then, so we were discussing the rebar concept. So here we are, and then so top reinforcement की हम बात कर रहे थे कि how we will denote it. So I said number 4. Actually, we were discussing the diameter, and I was asking you guys to let me know how do you do this diameter. So what will be the diameter of number 4 bar? Please, everyone on the chat. निकाला सबने? No, wrong, all of you. Wrong, wrong Aisha, wrong Rimsha. सर क्वेश्चन क्या है? मैं अभी ज्वाइन किया हूँ। 1/4. What will be the diameter of a number 12 bar? इसका diameter क्या होगा? Hani, you're right. Yes, Hijab. Excellent. 1.5. Because 12 divided by 8 is 1.5. Very good. So this 8 is somehow or the other strangely a very important number in engineering. Very, very, very important number in structural engineering actually. 8 is the minimum number of rebars that you use in pile foundations. 8 inches is the minimum width of the beam that you can use. 8, the American engineers love 8. So 8 and 12. We use this again and again in a lot of places. So again, once final time, the diameter, the designation of a number of bar is that number divided by 8 in inches square will be the dia. ठीक है? Not area, not radius, but dia. So if I say
Going back to the presentation, if I say कि ये जो है नंबर 6 की बार्स है, कितनी है ये? 1 2 Number 3 4 6. कितनी है? क्वांटिटी क्या है? 4. 4. ये 4 है. So on elevation, how you will do this? You will do this 4 dash number 6, which means कि ये 4 बार्स हैं नंबर 6 की. समझ आई कि नहीं? सर 6 तो पे आ गया, 8 नहीं था. कहाँ लिखा हुआ है 8? मैंने तो 6 ही कहा हुआ है. 8 कहाँ से आ गया? अब अगर ये नंबर 8 है, let me make this more confusing for you. If this is number 8, how many are there? 1 2 3 4. 4. How do I write this? 4. Sir, 4 number 8. Yes, 4 number 8. Okay. Now, furthermore, these vertical bars are called stirrups. Stir-ups. Stir it up, stirrup. How will you place this steel if you don't have this stirrup? Can you? You can't. ये हवा में तो नहीं लटक सकते. You need some kind of support. While they do Yes, sir. provide a support, they also provide sheer strength. And that's all we will study about them. Nothing more. Okay? Maybe in next year class. All they provide is sheer strength and hanger bar. They're also called hanger bars. So they are called stirrups / hangers. क्योंकि कंक्रीट तो बिल्कुल ढीला मिक्स है. You need to have these hanger bars to get this structure in place before you pour the liquid concrete or fluid concrete, not liquid. So ये hanger bars हैं. अब ये कितनी हैं? How do we count them? Can we count them? अब पूरी की पूरी काउंट करके तो लिख नहीं सकते. So what do we do? What we basically do is हम ये कहते हैं कि जी नंबर 3 की स्टिरअप है एट द रेट 4 इंच सेंटर टू सेंटर. मतलब इसका डाया नंबर 3 है और ये 4 इंच के फासले पे है. हर 4 इंच पे अपने आप को रिपीट कर रही है टिल 48 इंचेस फ्रॉम दिस कॉलम. अगर ये पहली बार समझ में आए, डू नॉट वरी, वी विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम द सेम पॉइंट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास सो दैट इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस देन ऑनवर्ड्स. बट वंस अगेन नंबर 3 की बात. सर एक बार तो वापस समझा दें. राइट. सो मैं ये कहता हूं इस बार का डाया है नंबर 3. ठीक है. और इसका फासला है रिकरेंटली 4 इंच 4 इंच 4 इंच 4 इंच 4 इंच 4 इंच. दिस इज ऑल 4 इंचेस 4 इंचेस 4 इंचेस 4 इंचेस 4 इंचेस 4 इंचेस 4 इंचेस. क्या मैं इस तरह लिखता रहूं बेवकूफों की तरह? और आई कैन राइट दिस कि जी यहां से लेके यहां तक नंबर 3 एट द रेट 4 इंच है. क्या ख्याल है? इज दिस नॉट अ लिटिल बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स? या मैं ये लिखता रहूं 4 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 फिर 6 6 6 6 6? अच्छा नहीं है कि मैं ये कर दूं सिंपल? Yes, sir. In a way, let's lay down some. Let's lay down some. If we have, say, sticks on the beach, I have stick number 1, stick number 2, stick number 3, stick number 4, 5, 6, and then 7 and 8 and then 9. The distance between them is 3 inches, 3 inches, 3 inches, 3 inches, 3 inches, then 8 inches, 8 inches and 8 inches. या तो मैं यू डायग्राम बनाऊंगा,
लेट से मैंने एक बीच के ऊपर जो है वो स्टिक्स लगाई हुई है, सही है, यू आर ऑन अ सिटिंग ऑन अ नाइस बीच, यू हैव नथिंग बेटर टू डू इन लाइफ एंड यू आर प्लेइंग विद स्टिक्स, ओके, और आई कैन डू इट इन अ फैंसियर वे, आई से कि यहां से लेके यहां तक the stick is number 3 and it is at 3 inches to each other, and from here to here the bar is again number 3 but it is at 8 inches to one another. समझ आई बात की? It's just a way of representing things. It's जैसे वो आप लोग अपने स्केचअप में या उसमें अरे होती है ना, वन डायमेंशनल अरे, वन डायमेंशन है ना, इट्स नॉट अ टू डायमेंशन, एक डायमेंशन में जा रहे हैं आप, वन डायमेंशनल अरे करते हैं ना जब आप राइनो में या उसमें स्केचअप में कोई अरे प्रोग्राम लगाते हैं, तो दिस इज एन अरे, सो दिस इज हाउ यू डू दिस एंड दैट्स इट, सिंपल, खत्म कहानी बीम की और कॉलम की. कोई सवाल? Any questions? We will repeat this again physically. Not in next class. I think next class is hardly 30 minutes, so maybe we'll just skip it and get to the next week. Now, if we cut the section of this, you guys have studied sections in drawing, sir? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, मैंने sir. एक सेक्शन काटा, अब मैंने ये एक सेक्शन काटा, तो इस सेक्शन में मेरे पास क्या है, ये इसको इग्नोर कर दें, ये स्लैब है, ये हम बाद में पढ़ेंगे. कैन यू सी द रिंग? कैन यू सी दिस रिंग? वेयर इज इट? हेयर इट इज, ये रिंग है, हेयर इज द रिंग. कैन यू सी द बॉटम बार्स? These are the bottom Yeah. bars. Now here the story is a bit different. सर रिंग कौन सा है? ये जो रिंग लगा हुआ है पूरे का पूरा, this is going all the way like this. Hanger या stirrup या ring. This is stirrup is here. Look, this is the stirrup. अब मैंने सेक्शन काटा ना ड्राइंग में, यस सर, समझा ये के. सेक्शन मैंने काटा, तो मेरे पास ये रिंग आ गया. ये टॉप के बार्स हैं, इसमें 3 है, वैसे हमारे पास 3D में 4 है, सो लेट्स से 4, सो आई से 4, नंबर 6 और नंबर 8, ठीक है. और ये बॉटम बार्स है और ये कंक्रीट है, ये हैच कंक्रीट का है. रिमेंबर दिस प्लीज, दिस इज अ वेरी टेक्निकल हैच. द हैच ऑफ कंक्रीट इज ए ट्रायंगल, ए डॉट एंड अ सर्कल. यू नो व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स? Cement, sand and aggregate. So this is the hatch that is mostly used, and this is a very rough hatch. This is a very different kind of hatch by, I think, Revit, but technically in old times when you used to make drawing, this was the hatch that was used for RCC. Same is the story with the columns. Tell me what's different. It's the same, it's a line element. So line element essentially has linear steel. Line element will have linear steel. These are your primary bars. And these are what? What are these? प्राइमरी बार्स. Rings, stirrups, hangers, you can call them that. Now if ये अगर 3-3 इंच के ऊपर है तो मैं 3-3 इंच लिखूं बैठ के. अगर ये 3 इंच के ऊपर है और नंबर 4 के हैं तो मैं यहां से कह दूंगा कि जी यहां से लेके यहां तक आप भाई साहब नंबर 4 के बार डाल दें एट 4 इंच या 3 इंच, ठीक है. सिमिलरली इन माई कॉलम आई हैव बार्स. हाउ मेनी बार्स डू आई हैव? हाउ मेनी बार्स डू आई हैव? प्लीज काउंट, टेल मी. और नंबर जो है इसका नंबर 12 है. कैसे लिखूंगा मैं? कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 और 8. नंबर 12. So I will like 8 dash number 12, ठीक है. But what if I am a very good engineer and I've optimized this, और ये वाला बार
ये वाला बार और ये वाला बार नंबर 12 का है, और अंदर वाले 1 2 3 4 नंबर 8 का है. So what I will do is, this I will write as number 4 number 12 plus 4 number 6, sorry 12 and 8. So it's not important that कि जो बार का डाया है वो एक जैसा ही हो. It can vary, it can be different. समझ आई बात की? I think let's leave it at this, or it will become a lot of complicated. But the next class, I really want you to be very well versed with the curve. या पढ़ना है और? Should we continue? I can do it. No. है ना? No, sir. बहुत ज़्यादा टू हो गया ना absorb. So Yes, what I want sir. you to do is practice with this, and let's see how many of you have actually submitted your proposal. सबने कर दिया proposal submit? Yes, sir. Yes, sir. Not proposal, the first page of it now. The subscription will cancel today. अच्छा. So I have only 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5 multiplied by 15, 16. That's it? Okay. What can I say? Access is closed. And final project. I actually made your final project scoring sheet. Where is that? Yeah, this I should move to. So if you haven't submitted your proposal after the introduction, you've lost 10 points. Okay, so congratulations. That's like almost what, 5% of your semester points. ठीक है जी, that's on you guys. So जिन लोगों ने करा दी जमा, Excuse me, sir. जी, Sorry, मैं disturb करूँ. I just wanted to ask if there is a group of 2 people, do we have to submit twice? yes, Yes, sir. Okay, sir. you have to submit it twice. For now, I can see अगर दो नाम लिखे हुए तो I'll mark you guys, no problem. But next time, submit it twice. But if you haven't submitted at all, then that's on you. So who is Sir, twice? 2 मिनट के लिए आप खोल दो प्लीज. Sorry, absolutely sorry. मुझे सख्त जहर लगता है ये कॉन्सेप्ट, हर वक्त फेवर मांगना फकीरों की तरह. डू यू नो 4 करोड़ पाकिस्तानी आबादी है ही फकीर. दैट्स द न्यू स्टेटिस्टिक्स. मेरा दुबई का वीजा रिजेक्ट क्यों हुआ है? सबसे ज्यादा फकीर दुबई में पाकिस्तानी पकड़े गए. डोंट बेग प्लीज, हैव सम डिग्निटी. टाइम के ऊपर करना था ना. मैं आई विल मार्क दीज पीपल 10 पॉइंट्स and rest is up to you now. Or research quality is now next, and then knowledge, and then physical model, and the final paper. So if you take it so easy, then that's on you guys. I can't do this again and again. Okay. So thank you very much. I'll just go to the attendance. सारा गुस्सा वीज़े का मैं तुम लोगों ने निकालना है. सर मिल जाएगा, कुछ नहीं होता. नहीं, मुझे अब चाहिए भी नहीं है वो. सारा पाकिस्तानी टूरिस्ट वीज़ा बैन हो गया है एक्चुअली. यू कांट गो टू दुबई बिकॉज माशाल्लाह सारे आपके हम वतन वहाँ पे भीख मांग रहे हैं. सर किसी बेहतर जगह पे चले जाओ. नहीं, मैंने जाना था एग्जीबिशन पे 3D प्रिंटिंग के ऊपर, बड़ी ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट हो रही थी. लास्ट ईयर भी मैं गया था, उससे लास्ट ईयर भी मैं गया था. इस साल उन्होंने वीज़ा ही बंद कर दिए, रिस्पॉन्स ही कर दिया. रिजेक्ट तो नहीं, उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया कि जी वी आर नॉट गिविंग यू एनी वीजा दिस टाइम ऑफ द ईयर. 4th टाइम
इफ्तिखार अहमद. Yeah. Iftikhar is here or not? Absent. Izaz. Absent. Ehsan. सर एजाज का नेट का इशू आ रहा है. चलो तो फिर इसको कहो मुझे व्हाट्सएप करे ना. तुम्हें बता मैं सकता, कहता हूँ मुझे नहीं सर. बता सकता. एहसान रियाज. एहसन रियाज. एमन. एमन. सर एमन ने चैट में यस सर लिखा है, उसका माइक नहीं ऑन कर सकती होगी शायद. ईशाल. ईशाल. Ishal, I can see her here, but she's not in there. Ishal, are you there? Sir, she also wrote in chat. She wrote in chat. She said here. सर वो कह रही है उसका माइक नहीं काम कर रहा. Okay. ईमान. उसका चैट में लिखा हुआ है. Okay. ईशाल फातिमा. प्रेजेंट सर. ईशाल सुहेल. ईशाल सुहेल. फारिया. प्रेजेंट. फिजा. प्रेजेंट. हिजाब. प्रेजेंट सर. हुजैफा. Present, sir. ईमान बिनते कामरान. प्रेजेंट सर. इज़न. प्रेजेंट सर. महरोश. प्रेजेंट. मलिहा. प्रेजेंट सर. सर महरिश. मैंने आपको बताना था, अब मेरी 75 लगी हुई है, हालांकि मैं सारी क्लासेस में प्रेजेंट थी सर. तो फिर कहाँ पे एब्सेंट है? विल चेक. मैं आऊंगा ना कल स्कूल अगली दफा, तो विल कैन चेक इट. मिसबा. ठीक है सर. प्रेजेंट सर. मोमिना. मोमिना. प्रेजेंट सर. अरमगम. प्रेजेंट सर. हुजैफा. प्रेजेंट सर. क्या हुआ? मुंतहा. प्रेजेंट सर. नूरा. प्रेजेंट. नूरुलैन. प्रेजेंट सर. कंबर. कंबर. रयान बिन शाहिद. प्रेजेंट सर. रिमशा. सर कमर भी प्रेजेंट है, उसका माइक नहीं काम कर रहा. कंबर है ही नहीं है यहाँ पे. कहाँ है? सर था तो शुरू में. बस वो फिर वो लगा के चला गया होगा, और क्या. सर मेरा भी सेम इशू है अटेंडेंस का. क्या इशू है? प्रेजेंट था सारे दिन, लेकिन एब्सेंट लगी हुई है. कौन सी क्लास में? सब क्लासेस में प्रेजेंट था. सर ये मुझे लग रहा है कि जो आपने बिल्कुल पहले दिन वाली लगाई थी ना, वो नहीं लगी हुई आधे लोगों की. अच्छा हाँ, पहले दिन की मैं देख लेता हूँ, उसको कर लेंगे. दैट्स नॉट एन इशू, वी विल फाइंड इट आउट. अगर एक आधी पूरी भी तो आई डोंट माइंड, आई कैन डू इट. रोहा. थैंक यू सर. प्रेजेंट. सफूरा. सफूरा is okay here. Saman. सानिया. सानिया.
पुज़मे, Present. बिन्त ज़हरा, Present, sir. मरियम, Present. उम्मे हानी, उम्मे हानी, सर उसने चैट में प्रेजेंट लिखा है। यसरा, Present, sir. जीनिया, Present, sir. निमरा, कोरीन, अर्शियान, हरीम, शियान प्रेजेंट है, कह रहा है कि मेरी अटेंडेंस लगा दूं, चैट में लिख दिया। हरीम, हरीम, हरीम बीमार है। are you there? नहीं सर, हरीम हॉस्पिटलाइज्ड है। खैर हो, क्या हुआ है? सर डेंगू हुआ है। ओह, अच्छा। तहरीम, अच्छा हरीम की मेरे पास वो भी है। आई थिंक आई हैव हरीम्स एप्लीकेशन। Shazal Islam, reference to the email subject. Unfortunately, Hareem. Okay, this is the Hareem. F.A. Bar, है ना? यस सर। सर 015। 015, हाँ ठीक है, इसकी एप्लीकेशन भी आई हुई है। ओके, हरीम। तहरीम, यस सर 051। Present, sir. अहमद, Present, sir. आयशा, अहमद मुज्तबा, प्रेजेंट सर। okay, so everybody's here. If I have I missed anyone? Right, so hopefully see you not next week, maybe next to next week, because next week I think you guys have the student week and you'll be good for nothing for the whole week, I guess. Yeah, so focus on your projects. Does anybody wants to discuss in your project or anything? यस सर। यस सर वी डू। You guys do? Then when I was asking on the WhatsApp that I'll have a class with you guys, you didn't say anything. सर हमारी सर, 2 वो- दिन तो वो नहीं था, टाइम नहीं था। कल भी वी हैड सम वर्क। कल सैटरडे को रखें फिर एक दिन, let's say 10:30 to यस 12:30. सर रख लेते हैं। Let's end this today. It's been 2 hours. It's been hectic. You won't be able to absorb. So tomorrow Saturday we can do this 10:30 to 12:30. Okay? सर उस क्लास में क्या होगा? I'll be online 10:30 to 12:30. जिसके जो सवाल हैं प्रोजेक्ट के बारे में, कोई डिस्कशन करनी है, कोई हेल्प चाहिए है, so I'll सर be हमारा there. तो हीट कैट रिलेटेड है, उस दिन नहीं हो पाया था। ये सर जरगाम just came to the class so you had to leave. हीट वाला ना, तो हीट की क्लास कर लेंगे Yeah. कल। ठीक है, यू आर Perfect. 6 गर्ल्स ऑन हीट ट्रांसफर के ऊपर एक अच्छा सा लेक्चर करते हैं और हम वो कर Yes, लेंगे yes. इस पे। ठीक है, okay, I'm Yes, going to upload the recording of this class and then you can go through the whole lecture again. If there is something confusing, I think this will be the best way to do it. And Okay sir. yeah, and what more, what less? Today is 4th and there you go, submit this. Yes, thank you very much for your time. See some of you tomorrow 10:30 to 12:30. Okay, okay, thank you, bye bye. Love you sir. Sir.